Hello, 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 hello. I think there's some network issue. Hello, 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 learners. Welcome back to the channel Economic Cities. And today we are going to start the PYQs of two chapters aggregate demand and determination of income and investment multiplier. Am I audible? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Hello. Hello learners, welcome back to the channel Economic Cities, and today we are going to start the PYQs of two chapters aggregate demand and determination of income and investment multiplier. Okay, so I'm going to share some questions of PYQs, okay, from aggregate demand to complete those questions that have been frequently asked, okay. So what I'm going to do, I'm just going to first write the formulas, right? So here we have, first of all, income is equals to consumption plus saving. Okay, this is for the aggregate demand. Okay, chapter. Then when you are going to calculate saving,
You need what? That is, from income, we will subtract consumption, then we will get the saving. Okay, these are the formulas. That is important formulas, right? So there is some network issue, that's why आपका वीडियो जो है ना थोड़ा सा स्टॉप हो रहा है. Then if you need to calculate aggregate demand, then we have to add consumption plus investment. Then for aggregate supply, consumption plus saving. And if the question is asked to calculate APC, then consumption upon Y is equals to 1 minus APS, right? Then APS is equals to S upon Y is equals to 1 minus APC. Okay, so these are basically the formulas. Now, if you need to calculate this for the APS and APC, now if MPC is asked, okay, therefore MPC is equals to M means that it's a marginal, that is additional. So change in consumption upon change in income is equals to 1 minus MPS. This is the formula if you need to calculate MPC. Then for MPS, that is marginal propensity to save, delta S upon delta Y is equals to 1 minus MPC. Okay, so these are the formulas that we have to apply in rest of the questions. And most important thing, consumption function की अगर आपसे पूछी जाएगी equation. कंजम्पशन फंक्शन का क्या है? C बार और ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस B is MPC and Y is the national income. For saving function, सेविंग फंक्शन इज इक्वल्स टू नेगेटिव आपका आ जाएगा C बार प्लस 1 माइनस B कर देंगे हम या MPS कर देंगे एंड देन Y. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. दीज आर द फॉर्मूलाज जो आपको आने चाहिए एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में, राइट? Now, what I'm going to do here, I'm going to just give you few questions. You will just see this question and start solving with me. Okay? I hope these formulas are quite clear. ये क्वेश्चंस आपके सब बोर्ड्स में पूछे गए हैं, तो इन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे. इधर इन MCQ और इन 4 मार्क्स और 6 मार्क्स और 3 मार्क्स, these questions come. Okay? कंजम्पशन फंक्शन का क्या है? C बार और ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस B is MPC and Y. Okay, so the first question is, suppose in a hypothetical economy the income rises from, okay, the information given here is this question. Given information is income rises, okay, that is income rises from, income is rupees 5,000 crores and it increases to rupees 6,000 crores. Suppose this is the question. And consumption is also given. Expenditure rises from 4,000 crores and it rises to rupees 4,600 crores. Right? Now you need to calculate MPC. Now you have to calculate MPC. Okay? Now how you're going to calculate? First, solution here. Okay? First we will try to get out to get the figure delta Y. So Y minus Y1 minus Y is equals to 6,000 minus 5,000. You will get 1,000, right? And delta C is equals to C1 minus C. So you will get here 4,600 minus 4,000 equals to 600. Now we know the formula.
MPC is equals to, yes. Now the formula we know, that is delta C upon delta Y. Delta C upon delta Y. Now put the value. Delta C is 600 and that is the change. Delta matlab change, okay? And Y is 1000. So how much you will get? 0.6. So MPC is equals to 0.6 is the answer, right? Please take the screenshot. Now next question we are going to start. Let me rub this. So these are kind of questions. If you know the formula, then you can easily calculate, okay, and get or score full marks, right? Let me just rub it quickly and then we are going to move to solve the other question. Okay, now come to the next question. The next question is, if you understand it, please tell me in the comment section. Yes, okay. What is the level of consumer spending in the country when disposable income is 1200? Okay, now here what they are asking here, consumer spending, that is C they are asking, okay, and given आपकी information क्या है, given information है आपकी y is equals to 1200, okay, and consumption function आपको given है C is equals to 0.75y plus 100. The consumption function consists of an autonomous consumption A 100 and marginal propensity to consume is 0.75. Okay, तो यहाँ पे क्या है गिवन आपका C बार है, ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको गिवन है 100, राइट, एंड MPC इज 0.75. तो MPC आपको गिवन भी है ऑलरेडी ऊपर भी, इज इक्वल्स टू 0.75. अब आपको कंजम्पशन कैलकुलेट करना है. Now how you're going to calculate? Let's find out. We know the equation of consumption function. C is equals to C bar plus BY. Okay, now we will put the values. Put the values, that is C is equals to C bar कितना है देखो 100 given है यहाँ पे, प्लस B कितना है MPC 0.75, ओके, एंड आपको इनकम दी हुई 100, तो इनटू हमने कर दिया 1200. नाउ C is equals to 100 plus 0.75 into 1200, you will get 900. Okay, so consumption is equals to rupees 1000. Okay, I hope it's quite clear now. You can take the screenshot. This is the question and this is the solution. Now next question we will do. Okay, the next question is, suppose MPC is given. MPC is equals to 0.6. What will be the change in consumption? Okay, they are asking here change in consumption कितना होगा. MPC का मतलब ही हो गया additional, right? If income increases by rupees 100, तो income कितनी हो गई आपकी 100 से increase कर रही है, right? We know the formula. MPC is equals to delta C upon delta Y, right? Delta C upon delta Y. Now put the values. आप इसी तरह एग्जाम में भी करेंगे, right? Put the values here. MPC का value है 0.6 is equals to delta C मुझे पता करना है. Now delta Y is 100. Now we will cross multiply. Delta C is equals to 100 into 0.6 and you will get 60. ओके, तो डेल्टा सी आपका आंसर आप अलग से लिखेंगे 60. ओके, एंड दिस इज योर आंसर. गॉट इट हियर?
प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ये एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको ऑप्शंस भी गिवन होंगे, बट अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो द फॉर्मूला यू कैन नॉट कैलकुलेट। ओके, तो आंसर आपको दिया गया है, लेकिन वही होगा जब तक जिसको पता है फॉर्मूला वही इसको सॉल्व कर सकता है, राइट। सो यू बेटर जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। दो दो एक एक तीन तीन मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when autonomous consumption मतलब C bar is rupees 100 crores. Okay, when autonomous consumption is 100 crores and MPS given है आपको, MPS is given 0.30. Okay, so this is the given information, right? And national income is 1500. So income is rupees 1500 crores. अच्छा, ये rupees और करोड़ लिखना बहुत जरूरी है, right? And total consumption will be, अब total consumption कितना होगा? Okay, let's find out here. The information is given. Hi Mahira. Okay, so total consumption कितना होगा इसमें? C is equals to, हमें पता है फॉर्मूला, C bar और autonomous consumption plus BY. B here stands for MPC, right? Now C bar is what? 100 given. ऊपर से देख हमने देख लिया, MPC 0.30. Okay, and Y is 1500. Now simplify that. 100 plus कितना आ जाएगा आपका? Sorry, here MPS है, it is not MPC. Okay, by mistake I have just given here. यहाँ पे देखो आपको क्या करना होगा, MPS given है, right? MPS given है 0.30. Okay, so what I will do here, MPC मुझे चाहिए ना, B का मतलब क्या होता है, B is equals to MPC. So 1 minus MPS is equals to MPC. So 1 minus 0.30. So I will get here 0.70. ठीक है, देखो छोटी सी मिस्टेक से पूरा सम गलत हो जाता है, राइट। ना 0.70 इंटू 1500 हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1050, and you will add 100 to it, so you will get 1150, and this is your consumption, rupees 1150 करोड़। ओके, ये जरूर से मेंशन करना। ओके, अगर ये आप मेंशन नहीं करेंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट करेगा। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक द क्वेश्चंस। प्लीज टेल मी, easy, tough, difficult, or just medium. Okay, these are all board questions, right? Now the next question I'm going to do here, let me rub it. आई होप आपको यही सब सिंपल बस फॉर्मूलाज इसमें अप्लाई करने हैं और फिर आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन का ज़रूर से आता है क्वेश्चन, वेदर इट इज़ ऑफ 6 मार्क या 4 मार्क्स का आएगा तो 2 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन, और इसमें भी पूछा जाता है, ठीक है ना, रिलेशनशिप। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ना सपोज इफ एमपीसी, एक और क्वेश्चन में देती हूँ, एमपीसी मान लिए कितना है 0.7। सपोज इंक्रीज इन national income increases to 1000 crores. Okay, then what will the result in additional saving? एडिशनल सेविंग ये पूछ रहा है, तो हमें पता है क्या होता है, एमपीएस, सेविंग के लिए एमपीएस चाहिए होगा, राइट। तो एमपीएस के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस एमपीसी। मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकती थी, तो 1 माइनस 0.7 इज इक्वल्स टू 0.3। यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, राइट। ठीक है, तो 0.3 क्या क्या आपका एमपीएस आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, वी नो द फॉर्मूला एमपीएस, क्योंकि हमें चेंज इन सेविंग पता करना है ना, एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ एमपीएस, दैट इज 0.3 इज इक्वल्स टू, सेविंग मुझे कैलकुलेट करना है और इनकम मुझे गिवन है, सो
चेंज इन सेविंग इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 into 0.3. So change in saving will be rupees 300 crores. Okay. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इसमें देखो बस ये था कि एमपीसी गिवन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है ना। और मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है एमपीएस का, आपको फॉर्मूला पता होगा ना तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, एमपीसी का ये फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे एमपीएस पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि ये और ये हमें फॉर्मूला में अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना होगा, एमपीएस कैलकुलेट करना होगा एंड देन फ्रॉम एमपीसी गिवन एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। ओके, so please take the screenshot. Please tell me in the comment section, are you understanding the question, the concept, the formulas? Okay. Now the next question is, suppose in a hypothetical economy the income rises from, okay, now here income y given है, ठीक है। इनकम इज, कितनी इनकम है आपकी, 500 to 600 है, 500 to 600, ठीक है। एज अ रिजल्ट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस। अब देखो ये उसी तरह का सम है जो भी हमने किया था पहले, फर्स्ट सम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम रुपीज 400, ओके, टू 500, राइट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ओके। अब मुझे बताइए आप कैलकुलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एमपीसी, ओके। तो अब हम ये क्या करेंगे इसमें, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या होता है, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ताकि बच्चों को समझ में सही से आए। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग राइट क्वेश्चन। तो डेल्टा वाई पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा वाई का होता है वाई माइनस वाई। तो 600 था आपका y1 एंड y गिवन है इतना 500, तो हमें मिल गया डेल्टा y इज 100। नाउ सिमिलरली हम डेल्टा c कैलकुलेट करेंगे, c1 माइनस c, तो c1 आपका 500 है माइनस 400, सो यू विल गेट 100, राइट। नाउ एमपीसी का मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। Now you can do it by yourself also. So you're getting the values of delta C is 100 and delta Y is again 100. So MPC is equals to 1 and this is your answer. So easy, right? तो इस तरह के भी क्वेश्चन इजी होते हैं जब तक आपको फॉर्मूला पता है, ट्रिक पता है, देन यू कैन इजीली सॉल्व एंड स्कोर वेल, ओके। अदरवाइज क्या होगा, इसमें ही बच्चे कंफ्यूजन भी हो जाती है और सही से अगर स्टेप बाय स्टेप आप नहीं करेंगे तो आपका आंसर भी नहीं आएगा, राइट। सो keep practicing, keep learning, okay, because daily revision is equals to a strong concept, right? So next question एक और हम करते हैं अभी इसका, ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे करा रही हूँ, अभी आपके साथ कर रही हूँ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो वैल्यू ऑफ APC इज इक्वल्स टू 0.8, ठीक है। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन भी इस तरह लिख देना ज़्यादा बेटर रहता है, राइट, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको, आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करते हैं। एंड नेशनल इनकम इज 4000 करोड़, करोड़ से कम देखो बात नहीं होती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सेविंग, सेविंग मुझे पता करना है, राइट। अब एपीसी गिवन है, नेशनल इनकम गिवन है, तो सेविंग कैसे आएगा, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे सोल्यूशन के लिए, फर्स्ट स्टेप, स्टेप वाइज ही करना, ठीक है। वी नो C is equals to what, APC sorry, average propensity to consume is equals to consumption upon income, right। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपका 0.8 is equals to
कंजम्पशन मुझे नहीं पता है, लेकिन इनकम मुझे पता है, राइट? नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. तो कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 0.8 into 4,000. So how much you will get? 3,200. तो अब देखो मेरे पास ये आ गया, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू रुपीज 3,200 करोड़. ओके, अब क्या होगा इसमें? वी नो द फॉर्मूला फॉर सेविंग. सेकेंड स्टेप क्या होगा मेरा? ये तो आपका फर्स्ट स्टेप था. ओके, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? वी नो द फॉर्मूला. सेविंग के लिए अगर मैं इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दूंगी, जितनी भी मेरे पास इनकम है उसमें से कंजम्पशन माइनस कर देंगे, व्हाट वी विल डू, वी कैन गेट द अमाउंट ऑफ और फिगर ऑफ सेविंग, राइट? तो ये क्या है आपका? नेशनल इनकम 4,000 गिवन है, कंजम्पशन आपका कैलकुलेट करके मैंने निकाला है 3,200. सो यू विल गेट हाउ मच? 800. और आप क्या लिखेंगे आंसर में? एज सेविंग इज इक्वल्स टू रुपीज 800 करोड़. ये पूरा आपका एक आंसर होगा, राइट? आई होप यू आर गेटिंग इट. देखो बस ट्विस्ट थोड़ा सा किया गया, एपीसी गिवन है और बोला सेविंग के लिए, तो हम इस तरह इसको जब कैलकुलेट करेंगे देन वी कैन गेट द अमाउंट ऑफ सेविंग. ओके, देन okay, now next question we can do here. Let me rub it. And please do watch the score booster series. Okay, what I have just done chapter wise, theory, solutions, okay, numericals. And if you want to go through the chapter wise, you can say the explanation, the summary, then go to the economics, that is my channel here, and then you can search over there. Playlist available है वहाँ पे, आप please उसको देख सकते हैं, right? Now the next question, what we can do here. Okay, let's do this one. In an imaginary economy, autonomous consumption कितना है आपका? Autonomous consumption is equals to 500. Okay, so autonomous consumption is 500. Autonomous consumption का मतलब है C bar. ठीक है? And don't get confused. And MPC is also given. MPC कितना है आपका? 0.8. Okay. Then what they are asking, saving function क्या होगा उसका? अब देखो सेविंग फंक्शन में क्या है, अगर आपके पास कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है तो खाली आगे माइनस लगा देंगे और एमपीसी की जगह पे एमपीएस कर देंगे, यानी कि वन माइनस, देखो एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? वन माइनस एमपीसी. ठीक है, ये ज़रूर लिख देना वरना एग्जामिनर को लगेगा कि आता नहीं था, बस ऐसे ही लिख दिया. ठीक है, तो 0.2. ठीक है, और सेविंग फंक्शन में क्या होता है, शुरू में हम खाली ये जो आपका ऑटोनमस कंजम्पशन होता है इसमें हम खाली माइनस नेगेटिव लगा देते हैं. ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की, जिनको आता है वो तो उनको पता है क्या करना है, राइट? सो वी नीड टू कैलकुलेट द सेविंग फंक्शन. ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस? लेट्स फाइंड आउट. वी नो द इक्वेशन, ये सोल्यूशन है आपका. स्टेप वाइज कर रहे हैं. हमें पता है इसके सेविंग फंक्शन इज इक्वल्स टू माइनस या नेगेटिव सी बार प्लस बी वाई. बी वाई का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस, बल्कि यहाँ पे और मैं डिटेल में कर दूँ, वन माइनस बी वाई. अच्छा, वन माइनस बी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एम पी एस. ठीक है, मैं ये हिंट दे रही हूँ आपको. तो यहाँ पे मुझे कंजम्पशन फंक्शन गिवन था 500, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस 500 प्लस वन माइनस बी का यह क्या हो जाएगा? 0.2 वाई. ये आपकी इक्वेशन बन गई. दैट्स इट. सो आंसर क्या हो जाएगा? सेविंग फंक्शन is equals to minus 500 plus 0.2 y, and this is your answer. आंसर अलग से हाईलाइट करना प्लीज.
right? Keep practicing, keep learning. Every day counts, right? Thank you for appreciating the method. I'm going to rub it. I don't know why it's not getting rubbed. I think something happened to the screen. कुछ मैंने गलत select कर दिया है. I'm not habitual of it, but something has happened. Not getting it. Okay, so now let's start the other question. Now, now if an economy, the ratio of APC and APS is, now ratio of APC and APS given. Why it's not working? Just wait, something happened to the screen. कुछ मैंने चीज़ गलत select कर दी है. I don't know. मैंने क्या गलती कर दी? Okay, so let's see here. Okay, so there is some problem here. The issue has come. What we will do the next chapter in the next live. Okay, and hopefully you understand it very well. Okay, type done if you understand today's session, and type next if you want next score booster. Okay, keep revising, keep practicing, and remember, economics is easy when you understand it the right way. So this is economics at ease, simplifying economics one step at a time. See you soon. Thank you.